Well, Mumbaikars once again are facing incessant rains and all the woes associated with it. Whether it's delayed trains, waterlogged streets, pothole-riddled roads, or for that matter, long traffic jams. Waterlogging has been reported in several low-lying areas which earlier hit rush hour traffic. Trains on both central and western lines have been running mostly normal. Met Department has predicted rains in Mumbai till Friday. Maharashtra CM Eknath Shinde visited the Disaster Management Department to review the situation. He said that Mumbai civic body officials are monitoring 25 railway spots where waterlogging is likely. Pictures from earlier today of vehicles plying through waterlogged streets. आणि रेल्वे बंद झाले असे 25 स्पॉट आहेत. रेल्वे बंद झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जी काही फरफट होते नागरिकांची, महिलांची, पुरुषांची, सगळ्यांची, प्रवाशांची, आणि मग त्या ठिकाणी सगळं त्यांना जो काही अधिकचा मग जे काही टॅक्सीचं भाडं असेल, आणखी काही असेल, मग जे वाटेल तेवढं त्यांना पैसे खर्च करावे लागू नये म्हणून मी चेल साहेबांना सूचना केलेली आहे की याच्यामध्ये तिथे आपली यंत्रणा लावा. मुंबई महापालिकेचा एक वॉर्ड ऑफिसर ठेवा स्पॉटला, तिथे बीएसटीची सेवा ठेवा, त्या ठिकाणी त्यांना चहा पाणी नाश्ता त्याची एक सोय करा. पण सीवन म्हणजे अति धोकादायक, त्याच्यामध्ये त्यांनी ते घर खाली करून सुरक्षित स्थळी जाण्याच्या सूचना दिलेल्या असतात आणि त्यांची ट्रान्झिटची व्यवस्था देखील केलेली असते. Several areas in Mumbai are waterlogged, and this is not new that is happening. In fact, I'm right out here at Antop Hill area and you can see the visuals. Early morning, it was having more water, but at this point of time, I would request my cameraman to show you the visuals out here. These are the visuals from Antop Hill area, and the area is still waterlogged. The BMC officials are working since morning out here, and this is not new that is happening since we have been reporting in regards of Mumbai in every monsoon. BMC spends crores and crores of rupees, but the story remains the same and people have to face such kind of problems. बहुत बड़ी दिक्कत का सामना पड़ता है जब से ये महानगर पालिका, जब से शिवसेना की सरकार आई है. इसमें देखिए सब लोगों का दुर्लभ हो गया आना जाना. छोटे छोटे बच्चे, यहाँ कॉलेज है, स्कूल है, महाड़ा का स्कूल है, लेकिन यहाँ देखिए क्या समस्या है, क्या है, कितनी बड़ी परेशानी, कोई आ नहीं जा सकता है. Let me go across to my colleagues Sandeep and Ankit joining us live from different locations. Sandeep, where exactly are you? If you can, we were just listening into your report from that waterlogged streets. Now, what is the ground situation? Are there enough measures being taken to mitigate the waterlogging situation in particular? Because that slows down traffic like how inconveniencing the road traffic, and commutes are only getting longer. That is a major hurdle for Mumbaikars right now. What's happening on ground, Sandeep? See, at this point of time, I'm in Chembur and I'm been joined by few people, few residents of Chembur in order to get their reaction. But before I go to them, Afrida, one of the important point that, we have to highlight here is that more than 9,000 crores has been spent on storm water drain. Despite that, BMC is unable to control the waterlogging in the city, and due to which Mumbaikars are facing a lot of problems. In fact, we've been joined by few localites out here. We'll try to speak to them. लगातार मुंबई में बारिश होती है. हर साल की यही कहानी हो गई है कि बारिश होती है, सड़कों पे जाम लग जाता है, खड्डों के वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम भी जो है वो झेलना पड़ता है. कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? नमस्कार, मेरा नाम अतुल त्रिपाठी है. मैं ये पास के परिसर वाले बिल्डिंग में रहता हूँ. पिछले 7-8 साल से ये रोड का जो कंडीशन आप दिखाएंगे कैमरामैन को, बोलेंगे दिखाने के लिए, तो पूरा रोड का कंडीशन वही है. रोड में खड्डे में रोड हो गई है. ठीक है, तो
बारिश के कारण ऐसा हो गया कि पानी निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, तो जो रोड में खड्डे हुए वो पूरे पानी खड्डे में ही भर गए। उसके कारण क्या हो रहा है, अगर आप बाइक एक्टिवा कहीं लेके जा रहे हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि रोड कहाँ पे, खड्डा कहाँ पे। आप इधर बचाने जाते हैं तो इधर गिरते। अभी मेरे साथ में घटना घट चुकी है। परसों मैं मेरे भाई के लड़के को लेके जा रहा था, खड्डा बचाने के चक्कर में मैंने इस साइड में गया तो अचानक ब्रेक मारना पड़ा, उसके सिर पे चोट। कहीं ना कहीं बारिश को लेकर के आपकी क्या राय है? बारिश की वजह से आपके व्यापार में या आपके काम धंधे में कितना फर्क पड़ता है? काम पे जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? नहीं, बारिश हो रहा है वो बढ़िया है, पर बारिश तो होना चाहिए, पर उसके लिए बीएमसी को रोड हमको सही करके देना चाहिए। बीएमसी की क्या जवाबदारी है? रोड का मेंटेनेंस करना। तो रोड में जो खड्डे हुए उसको मालूम है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या मुंबई में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जिसके वजह से जो है बारिश का पानी जम जाता है? क्योंकि हर साल चाहे वो सायन हो, कुरला हो, अंधेरी हो, ये स्थिति जो है वो लगातार बरकरार रहती है। जी, अभी अपना मुंबई ड्रेन का जो समस्या है आज से नहीं, बहुत सालों से, उसके ऊपर जो बीएमसी जो भी उसके ऊपर पदाधिकारी है, जो भी उसके ऊपर जो सरकार चलाती है, उनको देखना चाहिए कि उनको बराबर से उसके ऊपर काम करके उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। क्योंकि ये एक दिन का माहौल नहीं है, एक दिन का ये नहीं है। आज हम बचपन से देखते आ रहे कि मुंबई हमेशा साइंस सर्कल, दादर, ये परिसर में हमेशा उनका हमेशा पानी भरते रहते हैं। बट अभी जो काम पे जाने के लिए दिक्कत हो रही है कि बारिश की वजह से, इसको बारिश को हम तो दोष नहीं देख सकते, इसको दोष देंगे हम बीएमसी को। ताकि जो भी आज मैं 2-3 साल से हमारे वाशीनगर का परिसर में एक जो कहिकैया रोड जो है, जो शास्त्रीनगर से ऊपर आता है, और दूसरा जो भवानी रोड है जो मच्छी मार्केट से ऊपर आता है, ये आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सालों से रोड की इतनी बेकार परिस्थिति है ना कि आदमी चल नहीं सकता है। वो You just heard the reaction Sandeep, out if I here. get it correctly, the monsoon preparedness, the kind of measures that should have been taken to mitigate the situation was not done. Obviously, the leaders were busy in a power tussle. Where was the time to focus on monsoon preparedness, Sandeep? Stay with us and let me go across to Ankit as well. Ankit, you are in Churchgate, a very, very busy area of downtown Mumbai. What is it like over there? Currently, I'm at Marines, and there's a heavy rain is going on over here. And as we all know, Marines is the place that people come here from long places, from central, from western. So they come here to enjoy the rainy season of Mumbai. But while going back from Marines, it is very, very difficult for them to go out and to go from their houses. So it's very difficult. So I have people who's here in Marines, and they are here to enjoy the rainy season. Let's talk to them what kind of problems they faced when the rainy season is going on in Mumbai. सर, मुंबई में जैसे कि बारिश होती है और अभी आप पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश के चलते आप मुंबईकर आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले मुंबई में जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे लोकली आपको ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। लोकल ट्रेन की वजह से ऑफिस जाने में प्रॉब्लम होती है। जो टाइम पे ट्रेनें चलती है उसका टाइमिंग थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमको। फर्स्टली द प्रॉब्लम इज द लोकल ट्रेन का ही है, हमको इश्यू होता है ज़्यादातर। हाँ, दूसरी चीज़ है रोड पे, स्ट्रीट पे पानी ज़्यादा भर जाता है, इससे हैवी ट्रैफिक भी हो जाती है, जिसकी वजह से बाइक और फिर कार फिर हमको ट्रैवल करने में थोड़ी परेशानी होती है। जो पानी का स्टॉप रुक जाने की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है बॉम्बे में। तो सर, जैसे कि आपको मैं बताना कि मुंबई में जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो अगर आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो तो उसके साथ साथ ऐसे कौन से परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? सर, जैसे रोड सही नहीं रहते हैं तो खड्डे पानी भरे रहते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हादसे होने के चांसेस होते हैं। और फिर पानी भर जाता है कहीं पे भी, जहाँ पे मतलब रोड अगर सही से बना नहीं है तो वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम आती है। So, like as you heard that people do face many issues because of the roads, because of the potholes. Yes, so what we are seeing, Ankit, thanks for joining us and getting us those voices. Interestingly, when we were with Sandeep, there were no rains there. It seems in Marine Drive, it's raining. So different parts of the city, again, typically have different issues. Sometimes it rains in one area and it's dry in the others. Ravi Raja, former opposition leader of the BMC, is with us on the program. Good evening, Mr. Raja. You are witnessing the mayhem as much as we are, and every time it's the same thing because of lack of preparedness. That is what the citizens are saying, that had this road been fixed, had certain measures been taken, it wouldn't have come to this, that now again, like every year, citizens are having to go through this mess, Mr. Raja. Yeah, I agree totally with you, whatever you're saying. The mayhem is going on
The reason is the lack of preparedness by the BMC administration. Every year, they say that we are prepared. But in spite of spending lots of, this year they have spent nearly 625 crores for anti-flooding. Now, where the money has gone? What is this anti-flooding? Everywhere there is water, everywhere there's a floods. So it is BMC who is responsible for that. And the lack of planning, today what happens, you are planning to a certain extent to a flooding spots, but there are many new spots which has come. If you see, we have never seen water being flooded in Fire Garden. We have never seen into Hindu colony. We have never seen in the Jain society. We have never seen, apart from Science Circle in the other lanes. Now the new spot has come in Antrophil. So everywhere, if you see, the BMC has failed. So the responsibility and accountability has to be taken by the BMC. Now, as you know, there are no corporators, there is no standing committee, there is no house. So it is the commissioner who has to answer these questions. He is responsible for everything what is going on in the city of Mumbai. And directly subways are getting blocked, sir, and you know how difficult it is. This is a linear city we are talking about. For anyone to come from the west Mumbai to east, the connecting roads are so badly choked, and I'm talking about this through personal experience. My commute time has gone over double, and time is money, isn't it, Mr. Raja? Tell us from your personal experience, and you've seen how the BMC operates. Where is the issue? Is taxpayers' money is absolutely gone waste if this is the facility? What are we paying taxes for? I agree with you. Mumbaikars, taxpayers' money is gone to the drains. I totally agree. Today, traveling from one place to another during the rain, you take double the time. Double the time means, the cost of the petrol, your diesel, your everything goes up. And other thing is the lack of planning. Today, what happens? Every commissioner comes, he has his own vision. Now, his vision is, you have to see the lack of planning is today, when you go in for, anti-flooding measures, you have to, first of all, find out the problem. The problem today is that, they are trying to solve the problem temporarily, and somewhere else the problem starts. There are more than 324 spots where today, new area where never has been flooded. Have you ever seen flooding in Marine Drive? Have you ever seen flooding in Lalbagh? I have seen, flood in the bridge of Lalbagh. So I think the lack of planning and now, it's even more severe a problem because there are no corporators to seek accountability. There's one administrator who's handling all the affairs. The BMC polls are due later this year. Until then, who will be answerable? That's another question. Thank you so much, Mr. Ravi Raja, for joining us on the program this evening. Thank you very much. Let's take a short break. On the other side, same pay for men and women cricketers. New Zealand has taken the lead. Will others follow? Stay tuned. in association